बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम केजी क्लास, वेलकम बैक टू द इंग्लिश लेसन। आई एम योर टीचर मिस सदफ। और आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है और हमारा किताब का जो सफ़ा है, जो लेसन है, इट इज़ अबाउट यूजिंग आर्टिकल इन सेंटेंसेस। सो चिल्ड्रन, आई होप यू रिमेंबर कि हम पिछले लेसन में आर्टिकल्स के कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड कर रहे थे। थोड़ी सी रिवीजन आप मेरे साथ कर लीजिए और उसके बाद टीचर आपको किताब का ये सफ़ा खोलने के लिए कहेंगी जिसमें आप अपने आर्टिकल को अप्रोप्रिएटली खुद से सिलेक्ट करेंगे कि विच वन इज गोइंग टू फिट इन हियर। और वो हमने क्या सीखा था प्रीवियस लेसन में, जरा आज मेरे साथ आपने रिफ्रेश करना है इस नॉलेज को, सो दैट व्हेन यू वर्क ऑन योर बुक यू डोंट मेक अ मिस्टेक। टीचर्स, हमारा जो ELO है इस लेसन का, इट इज अबाउट टू नो द साउंड्स ऑफ वाउल्स, और उसके साथ साथ आर्टिकल्स को आज इन्होंने आपको खुद यूज करके बताना है वेयर दे आर गोइंग टू राइट ए और वेयर दे आर गोइंग टू राइट एन। तो जल्दी से रिवाइज करें मेरे साथ और बताइए कि हमने ए और एन की अंडरस्टैंडिंग जो थी वो कहाँ डेवलप की थी। हमने ये सीखा था कि अल्फ़ाबेट्स हैं 26 इंग्लिश में, जिनमें से 5 हैं वाउल्स और बाकी के हैं कॉन्सोनेंट्स। तो जो वाउल्स हैं उनकी क्या पहचान है कि उनकी साउंड जो है वो सिमिलर लगती है, बट दे आर स्पेशली 5 सेपरेट लेटर्स फॉर इट, A-E-I-O-U। तो वो तमाम अल्फाज जिनके शुरू में ये वाले लेटर्स आते हैं जिनको हम वाउल्स कह रहे हैं, उनसे पहले हम एन लगाते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स हमने पिछले लेसन में प्रैक्टिस भी की थी जो कि लेक्चर में भी मौजूद हैं, और टीचर ने आपके साथ यकीनन जो है डिफरेंट फ्लैश कार्ड्स और चीज़ों के मुतालिक बात करके आपसे इस कॉन्सेप्ट को फर्दर भी शेयर किया होगा। और उसके अलावा हमने अ की बात की थी, जैसे कि अ गोट। तो अ हम कब इस्तेमाल करते हैं? जब बाकी के तमाम कॉन्सोनेंट्स के साथ जो वर्ड्स हमें मिलते हैं उनके साथ हम अ लिखते हैं। थोड़ी सी रिवाइज कर ले मेरे साथ। लेट्स सी व्हाट डू यू सी ऑन द स्क्रीन। दिस इज अ पिक्चर कार्टून ऑफ एलिफेंट्स, और एलिफेंट के शुरू में कौन सा वाउल आता है? एह। और एह के वाउल से पहले हम लगाते हैं एन। सो हाउ एम आई गोइंग टू यूज दिस इन माई सेंटेंस? This is an elephant, or I can say that is an elephant. Good. So focus is on the vowel and we start with an. Now let's have another look. This is a very cute little cat. Cat. So are we going to say an cat or a cat? A cat, because this is a consonant, it is not a vowel. Very good. Next, a house. A house. आपका जो डिसाइड करना है कि अ आएगा या एन आएगा, it is the initial sound. Remember, now this is why teachers that when we are practicing sounds, तो हम जब साउंड के साथ रिलेट करते हैं तो चिल्ड्रन अंडरस्टैंड इट बेटर कि ए और एन कहाँ पे आना है। Another example, this is इग्लू। इग्लू याद है आपको, हमने ई की साउंड के साथ पढ़ा था, तो दिस इज एन इग्लू। हाउ विल वी से इट? दिस इज एन इग्लू। गुड। अनदर पिक्चर, अनदर एग्जांपल। दिस इज अ कोआला बेयर। अ कोआला। व्हाई डिड आई पिक अ? बिकॉज दिस लेटर इज नॉट अ वाउल, इट्स अ कॉन्सोनेंट। अनदर एग्जांपल, दिस इज an umbrella। शाबाश, an। why an? because इससे पहले जो लेटर है, इनिशियल साउंड है, वो एक वाउल की है। so teachers, now they have practiced some words with me. you have to further build upon this and then tell them to use these into small sentences. प्रैक्टिस के लिए किताब में जो सफ़ा दिया गया है उसमें कुछ सेंटेंसेस हैं जिनमें इन्होंने खुद से डिसाइड करना है where to write a and where to write an. They have to look at the initial sound of the given words. Now some of the words are here, the rest you can give them in worksheets, or you can write words and sentences on the board, because you have to achieve these two expected learning outcomes in which they have to identify vowels. So there is a practice worksheet attached to the description box. Make sure you download it and use this resource for your facilitation. Continue with the lesson. Take care and Allah Hafiz.